Hello children, today we'll discuss the mode of respiration in humans. As we all know, human beings are multicellular complex organisms which has major systems or major organ systems in their body. So for respiration, for exchange of gases, they have a specialized system in their body that is known as human respiratory system. Human respiratory system composed of following parts. The first part is nostrils. So we study the parts from this diagram. The nostrils are two present in the nose. These holes are referred as nostrils. The air is inhaled through these nostrils. Air in nostrils के through inhale की जाती है, बच्चों अंदर ली जाती है. Then that air will goes into the cavity. That cavity is known as nasal cavity or nasal passage. जो दूसरा पार्ट है बच्चे, दैट इज नजल कैविटी और नसल पैसेज. नॉस्ट्रल से एयर जाती है और इस कैविटी के अंदर चली जाती है. नॉस्ट्रल से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द नॉस्ट्रल्स और नजल ब्रीदिंग, दैट वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर माउथ एज वेल. दैट ब्रीदिंग थ्रू माउथ इज नोन एज बक्कल ब्रीदिंग, बट स्टिल इट इज प्रेफर्ड दैट nasal breathing is much better as compared to buccal breathing. It is always said, it is always suggested that we have to breathe through our nose, not through our mouth. हमेशा ये कहा जाता है बच्चे कि नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं. क्यों? Because the nasal cavity, this nasal passage contain hair and mucus in it. हमारा जो nasal passage है उसमें hair और mucus होते हैं बच्चों, which traps the dust particles and impurities which are going to our nasal chamber through air. जब हम बच्चे एयर इनहेल कर रहे हैं तो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे नोज में चले जा रहे हैं बच्चे. तो उन्हें बच्चे लंग्स तक ना पहुंचने दिया जा सके, वो लंग्स तक ना पहुंचे, इसलिए बच्चों हमारे जो नॉस्ट्रल है, हमारा जो नजल पैसेज है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? हेयर एंड म्यूकस. म्यूकस इज अ स्लाइमी सब्सटेंस which do not allow the entry of dust particles or impurities into our lungs. Whereas if we breathe through our mouth, there is no such cavity or hair present in that path, in the buccal cavity. So the impurities will go into our lungs by that. Next part is pharynx. Pharynx is basically a common passage for food as well as for wind, air. Pharynx बच्चे common passage है air के लिए भी और wind के लिए भी. Next is larynx. Larynx is also known as voice box. Larynx in adult human males is more prominent as compared to females. जो बच्चे मेल्स होते हैं एडल्ट, उनमें जो ये लैरिंक्स है वो यहाँ पर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है. प्रोमिनेंट मींस उभरा हुआ, ज्यादा दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है एज कंपेयर टू द फीमेल्स. अब बच्चे हम लैरिंक्स से रिलेटेड या लैरिंक्स से के आसपास की दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट वन इज ग्लॉटिस. Pharynx enters into larynx or pharynx open into larynx by a slit-like aperture. Slit मतलब ढक्कन जैसा. ये एक slit-like aperture है which is present in between the pharynx and larynx. The second structure is epiglottis और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनता है बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए. Epiglottis is a ring-like cartilage present over glottis, and it prevents the entry of food into the windpipe. हमें बच्चे हमेशा सलाह दी जाती है कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, वो इसी वजह से बोलते हैं बच्चे. When we breathe, when we basically swallow, we do not inhale. जब हम swallow करते हैं, जब हम फूड निगलते हैं, तो हम सांस नहीं लेते at that time. Why? Because अगर बच्चों हम उस टाइम पर सांस ले रहे होंगे तो जो हमारा ग्लॉटिस है वो ऊपर नीचे होगा तो फूड जो है वो विंड पाइप में जा सकता है नेक्स्ट पार्ट में. इसीलिए बच्चों ये सलाह दी जाती है कि हमें खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए. और बच्चे नॉर्मल कंडीशंस में फूड जो है वो विंड पाइप में, ट्रैकिया में ना जाए, इसे प्रिवेंट, लैरिंक्स में ना जाए. कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस के ऊपर एक रिंग लाइक कार्टिलेज है जो ये चेक करता है दैट फूड कैन नॉट बी एबल और फूड डज नॉट एंटर इनटू लैरिंक्स और यू कैन से विंड पाइप. द नेक्स्ट पार्ट इज ट्रैकिया. दिस पार्ट इज ट्रैकिया. The most prominent feature of trachea is
it is composed of rings of cartilages. हमने 9th क्लास में पढ़ा भी था बच्चे, cartilages are present in trachea और in our ear, human ear, पिन्ना में present है बच्चों. Cartilage किस तरह से अटैच है बच्चे? ये एक रिंग है, the other one is placed below it, and then so on. That's how the rings of cartilage are arranged in a vertical manner that will form a windpipe that is referred as trachea. A very important question is related to that rings of cartilages. Why the trachea is made up of rings of cartilage? What advantage is possessed by trachea of having these cartilaginous rings? एक क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन. वो ये है बच्चे कि जो ट्रैकिया है इसे क्या एडवांटेज मिलती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बने होने से? द एडवांटेज इज दैट इट डू नॉट कोलैप्स. जब बच्चे हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो ये ट्रैकिया ओपन रहेगा, लेकिन अगर हम एयर एक्सहेल करेंगे और ये कार्टिलेज का बना हुआ ना हो, स्किनी हो, तो ये कोलैप्स कर जाए. तो जो रिंग्स हैं, जो ऑपोजिट वॉल्स हैं ट्रैकिया की, वो कोलैप्स ना हो, इसीलिए trachea is made up of ring of cartilages because cartilages are rigid and flexible. ये सख्त होते हैं और flexible होते हैं, इसकी वजह से ये चिपकते नहीं हैं. तो बच्चों, the advantage of rings of cartilages in windpipe or trachea is that they do not collapse during exhalation. जब हम air exhale करेंगे तो ये collapse नहीं होंगे. Next, trachea is divided into further branches, into two branches. One goes to the left side and another one goes to the right side. One more thing we have to keep in mind is bache, this lung, the lung which is present on this side is right lung, and the lung which is present on this side is left lung. Actually picture है बच्चे ये इस तरह से है. The person is standing in front of you like this and his face is like this. These are nostrils, nasal cavity, pharynx, larynx, windpipe, right lung and the left lung. So these are the diagram which you draw on the paper is basically the mirror image where right appears on the left side of the paper and left appears on the right side of the paper. Mirror image बनती है बच्चे. जो तुम एक्चुअल में राइट साइड पर बना रहे हो वो लेफ्ट है और जो लेफ्ट साइड पर बना रहे हो वो राइट है. There's a difference between right and left lung. The right lung is bigger in size, is broader in size. ये चौड़ा होता है, but smaller. ये चौड़ा होता है, but छोटा होता है. जो left lung है ये लंबा होता है. It's larger. It's not larger. It's longer, but narrower. चौड़ाई इसकी कम होती है, but जो length है वो ज्यादा. इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और length कम. Next, जो बच्चे हमारा लेफ्ट लंग है उसमें एक नॉच प्रेजेंट होती है. दिस इज अ नॉच, ये जो बनाया गया दैट इज नॉच. दिस नॉच इज मेड टू प्लेस द हार्ट. हार्ट बच्चे हमारा जो है वो लेफ्ट साइड पे टिल्ट है और उसको जगह देने के लिए जो हमारा लंग है लेफ्ट लंग वो हल्का सा नॉच्ड है, हल्का सा टिल्टेड है, बेंड है फ्रॉम द सेंटर, वेयर राइट लंग इज स्ट्रेट. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग. So the bronchi will enter into the lungs. One is towards the left lung and another one is towards the right lung. Then bronchi, these bronchi, the singular is bronchus. Then these bronchus divided into further branches known as bronchioles. In right lung, bronchiole is divided into bronchi is divided into three bronchioles, and in left it divides into two. जो बच्चे राइट लंग है उसमें ये जो ब्रोंकस है ये 3 ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 में. ध्यान रखिएगा इसको बच्चे. राइट लंग में जो ब्रोंकाई है वो 3 ब्रोंक्यूल में डिवाइड होगा मेन ब्रांचेस में, और जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 में. Then bronchiole has further branches. These 3 are then further divided into 3 and then so on. And at the tip of those bronchioles, certain sac-like structures are present. और उसके टिप पर इस तरह से सैक, थैली के जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी. दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज alveoli. Alveolus is singular and alveoli is plural. In one lung, approximately 150 million alveoli are present.
एक लंग के अंदर तकरीबन 150 मिलियन एल्विलाई होते हैं। तो दो लंग्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन हो गए। एंड इफ वी withdraw those, if we put out those alveoli and stretch them, then they approximately covers 80 meter square area। और ये सारे एल्वुलाई मिलकर 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अ टेनिस कोर्ट, जो एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर है। तो बच्चों, इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग ऑफ अ बॉडी दैट इतना बड़ा वॉल्यूम सिर्फ हमारे दो लंग्स के अंदर है। दैट इज एल्वुलाई, दे आर प्रेजेंट इन वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म। सो due to that large surface area, the exchange of gases between the lungs and the blood is maximized. So that's the human respiratory system. There's one more thing in the diagram, and that is this. This is diaphragm. Diaphragm is present below the lungs, which separates the thoracic cavity. This cavity where rib cavity is present, with ribs are present, is known as thoracic cavity. And the lower, this soft part, which we usually call stomach, which is not stomach basically, that's the abdominal cavity. Thoracic cavity is separated by the abdominal cavity by a muscular structure, by a muscular organ known as a diaphragm. Diaphragm जो है बच्चे, वो thoracic cavity और abdominal cavity को separate करने का काम करता है। And diaphragm also helps in breathing, that is inhalation and exhalation. Breathe in and breathe out. We'll study it later. So that's the part of human respiratory system. One more thing is visible. One more thing is just visible in this diagram, and that is the blue part. These are the ribs, bache. Our lungs are very soft, so to protect them from any mechanical injury, there is rib cage present. There is a bony covering present around them, and that bony covering is known as rib cage. Rib cage also protect the heart present inside it. So this is the human respiratory system. So it is composed of nostrils, nasal cavity or nasal passage, pharynx, larynx. After the larynx, there is a windpipe which is made up of cartilage. It's a very important question. Then trachea is divided into two bronchi, which are singularly known as bronchus. One is towards the left lung and other one is towards the right lung. Then there are two lungs in which bronchioles and alveoli are present. So that's what the human respiratory system is all about. Now we study a question that how the lungs are modified to maximize the exchange of gases. As we have studied the बच्चों कि जो exchange of gases हो रहा है between the blood and the cells, that is to be promoted by lungs. जो lungs ऑक्सीजन देंगे बच्चों, वो ब्लड आगे जाकर सेल्स को लेकर आएगा। तो बच्चों, ये जो exchange of gases है, ये lungs में मैक्सिमम हो सके, इस चीज को कैसे इंश्योर किया लंग्स ने? देयर आर टू supportive actions or supportive factors are there. First one is large surface area. As we have studied that the alveoli present in the lungs are numerous in number. That is approximately 300 million in two lungs, which approximately covers 80 meter square area, which is a very large area for exchange of gases. Second thing, the alveoli are covered by a rich network of blood capillaries. जो alveoli है बच्चे, वो एक रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड है, और यू कैन से द लंग्स आर कवर्ड बाय अ रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, सो दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एल्वुलाई कैन टेक्स प्लेस डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट, यू मे आल्सो ऐड दैट द एल्वुलाई आर वेरी थिन वॉल्ड। जो एल्वुलाई होते हैं वो बहुत थिन वॉल्ड होते हैं बच्चे। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एल्वुलाई बीइंग थिन वॉल्ड? इसका फायदा क्या है? Being thin walled, the rate of diffusion, the change of or the exchange of gases takes place very rapidly. जो exchange होगा gases का, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बच्चे। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ब्लड में ऑक्सीजन जा पाएगी। The fourth thing which you may add, that is the moist. Alveoli are moist in nature. Alveoli जो होते हैं अंदर से बच्चे हल्के से moist होते हैं। हमारा इंटरनल पार्ट सभी के सभी लगभग moist है बच्चे। Due to that moisture, the rate of diffusion increases. डिफ्यूजन में बच्चों जो रेट है, उसकी जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ये दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, बट दीज टू आर द मेजर पॉइंट ऑफ दिस आंसर। नेक्स्ट विल स्टडी ब्रीदिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग है क्या? द इनहेलिंग
and exhaling of air is known as breathing. You can also make it more appropriate, that is, the inhalation of fresh air and exhalation of foul air out of the body is known as breathing. साफ हवा को अंदर ले जाना जो ऑक्सीजन रिच है, और गंदी हवा को बाहर निकालना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये एक शारीरिक प्रोसेस है, इट्स अ फिजिकल प्रोसेस, whereas respiration is a biochemical process. ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है बच्चों, और रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है. वो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नए केमिकल्स फॉर्म होते हैं. ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. रेस्पिरेशन सेल्स में होती है, ब्रीदिंग सेल्स के बाहर होती है बच्चों. ब्रीदिंग में बच्चों कुछ मसल्स इन्वॉल्व हैं. हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में कुछ मसल्स हेल्प करती हैं. दोज मसल्स आर दीज थ्री. फर्स्ट वन इज इंटरकोस्टल मसल्स, द मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब. फॉर एग्जांपल, दीज आर द रिब्स. देयर इज मसल प्रेजेंट इन बिटवीन द रिब्स, वन इन द अदर साइड and the other one is on the outer side. The outer side muscles are known as external intercostal muscles, and the muscles which are present inside the ribs are known as internal intercostal muscles. जो हमारी रिब्स है बच्चे, उनमें मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी. जो मसल्स हैं, that muscle which is present on the outside of the rib cavity is known as external intercostal, and the muscle which is present on the inner side is known as internal intercostal muscle. The second muscular part, which is a muscular curvature present between the thoracic cavity and abdominal cavity, is known as diaphragm. It also helps in inhalation and exhalation. And the third type of muscle which helps in breathing is abdominal muscle. Next topic of discussion is mechanism of breathing. Breathing involves two processes. One is breathe in, another one is breathe out. Breathe in is known as inhalation and breathe out is known as exhalation. We have studied that there are three muscles which helps in breathing. One is intercostal muscles, which are of two types, external intercostal and internal intercostal, diaphragm, and third is abdominal muscles. First बच्चों, during inhalation, when we inhale air, then external intercostal muscles, the muscles which are present on the outer side of rib, they contract. Due to that contraction, the rib cavity comes out. So external intercostal muscles contract. Diaphragm, which is basically curvaceous structure, becomes flattened. The diaphragm moves downwards and become flat. So external intercostal muscles contract, diaphragm flattens, and the muscles which are present on the abdominal cavity, they'll relax. All these three activities, the contraction of intercostal muscles, that is the external intercostal muscles, diaphragm's flattening, and the abdominal muscles relaxation, results in the increase in the volume of rib cavity. हमने ऑब्जर्व भी किया बच्चे, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी रिब कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है. ड्यू टू दैट द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस. लंग्स आर फ्लेक्सिबल बच्चे. पहले लंग्स को इतनी जगह मिल रही थी, रिब कैविटी बाहर आ गई तो लंग्स को जगह ज्यादा मिलने लगी. वॉल्यूम बढ़ गया तो जो उनके उसके अंदर एयर है, द एयर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग इज सेम. द प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर हो जाएगा रिड्यूस. So the pressure inside the lungs is reduced. Why? Because the size of lungs is increased and the air inside the lungs is same. That is why the air will starts to move from its higher pressure, that is from the atmosphere, into the lungs. तो बच्चों, जब हमने इनहेल किया, जो वॉल्यूम है वो बढ़ा. वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर जो लंग्स के अंदर था वो कम हो गया, तो एयर अपने हायर प्रेशर, दैट इज आउटर एटमॉस्फेयर, से कहां चली गई? लंग्स के अंदर. द पाथ ऑफ इनहेलेशन इज नॉस्ट्रल्स. पहले नॉस्ट्रल्स में गई बच्चे, देन फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू नसल पैसेज, देन टू ट्रैकिया, देन pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, and then to alveoli. और बच्चे एल्वुलाई में जाने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. That we will study after this topic. बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे.
एल्वियोलाई थिन वॉल्ड होते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देंगे और CO2 को ले लेंगे। इस प्रोसेस को पूरा होने के बाद हम एक्सेल करते हैं बच्चे। व्हेन वी एक्सेल, एग्जैक्ट ऑपोजिट अकर्स। फॉर इंटरकोस्टल मसल्स नाउ, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट। जो अंदर की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इससे क्या होगा, जो रिब कैविटी पहले बाहर निकली थी वो अंदर को आ जाएगी। पहले रिब कैविटी बाहर को थी, अब अंदर को। सो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। डायाफ्राम विच वाज फ्लैटेंड नाउ बिकम कर्व्ड। जो पहले फ्लैट हुआ था कर्व्ड हो जाएगा। The abdominal muscles which were relaxed now contracts. They will contract, and when they will perform these functions, internal intercostal muscles contract, diaphragm becomes curved, abdominal muscles contracts. Then these all three processes, these all three contraction and the movements results in the decrease in the volume of rib cavity. Rib cavity will pushed inward, and hence the lungs will pushed inward. Due to which, if volume is decreased, the pressure inside the lungs is increased. जो pressure होगा अंदर lungs के वो बढ़ जाएगा, and air will always move from its higher pressure towards lower pressure. तो air बच्चों अपने ज्यादा pressure that is from lungs to atmosphere की तरफ, बाहर की तरफ आ जाएगी. This is what the exhalation is all about. जो air हम exhale करेंगे बच्चे वो foul air होगी, और जो exhalation का path है वो exact opposite है inhalation का. That is from alveoli to bronchioles to bronchi to trachea, and trachea to larynx, then pharynx, after the pharynx nasal passage or nasal cavity, and then nostrils, and then to the atmosphere. So that's how inhalation and exhalation occurs in human beings. Now the next topic is breathing rate. Number of times a person inhale or exhale in a minute is known as breathing rate. The number of total breaths in a minute is known as breathing rate. एक इंसान एक मिनट में कितनी बार नॉर्मल कंडीशंस में सांस लेता है, सांस लेना मतलब एक इनहेलेशन एंड एक एक्सहेलेशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट वन ब्रीथ. एक सांस का मतलब क्या है बच्चों, एक बार सांस अंदर लेना और एक बार सांस छोड़ना, दैट इज व्हाट द वन ब्रीथ इज ऑल अबाउट. So, how many times a person breathes in 1 minute is known as its breathing rate. The normal breathing rate in general conditions is 15 to 80 times per minute. But during physical exercise, during extensive workout, during running, the breathing rate increases. It may increases up to 25 times than the normal one. In emergency conditions, ये 25 गुना तक बढ़ सकता है बच्चों emergency conditions में. Next is composition of inhaled and exhaled air. जो हम बच्चे एयर इनहेल कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस इज रिटन हियर. नाइट्रोजन इज 78% इन इनहेल्ड एयर, ऑक्सीजन इज 21% इन इनहेल्ड एयर, द कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, एक्चुअली इट इज नाउअडेज 0.04%. द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज्ड. वाटर वेपर्स आर वेरी फ्यू, दैट्स द NCERT बुक रिकॉर्ड बच्चे. सो द अमाउंट ऑफ एयर व्हिच वी इनहेल दैट इज equals to the atmospheric gas, atmospheric composition of air or gas. But the composition which we exhale has changed. That's how we can say that exchange of gases takes place. We do not use nitrogen. Our blood does not absorb nitrogen. So the 78% nitrogen which was inhaled is exhaled. जितनी हमने नाइट्रोजन ली उतनी छोड़ दी, ना कुछ ब्लड के अंदर गया ना कोई ब्लड से एक्स्ट्रा आया. The 21% oxygen which we inhale, that is from the atmosphere, the composition of environment, is reduced to 16%. That means 5% of the total air which we inhale will remain in the lungs, or you can say will go to the blood for exchange. Next, CO2 is 0.03%. You can write 0.04%. That's the correct reading as well. That's concentration, or its concentration is 4.4% in exhaled air. So the concentration of CO2 is increased in exhaled air and oxygen is reduced. That's why we usually say from your lower classes that we inhale oxygen and we exhale carbon dioxide. That is not the complete truth बच्चे. ऐसा नहीं है, हम नाइट्रोजन भी ले जा रहे हैं अंदर, बट हम पूरी की पूरी नाइट्रोजन जितनी अंदर ले जाते हैं सारी बाहर निकाल देते हैं. Next, water vapors. A very few water vapors will enter into our lungs, but the water vapors which we exhale has a very large amount. So that's the composition of inhaled and exhaled air.